Let's start with a moisturizer. I am using Pond's light moisturizer. You can use any of your moisturizer. आपको इसको डॉटिंग मोशन में लगाना है, फिर आपको इसको घिस के लगाना है अपने चेहरे पे। अच्छी तरह से इसको घिस के लगाना है, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। Next step is primer. It is very important, so please don't skip this step. Primer cover up your open pores and make your skin look flawless. Take very little amount of your primer and rub it on your face. फिर से अच्छे से घिस के इसको अपने फेस पे अप्लाई करें और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। Basically, I'm not a foundation person, so here I'm using Pond's BB cream. This gives you a very good coverage. Just 2 pumps of it and you will see magic. This gives a very good coverage. First, apply it on dotted motion all over your face. And please don't forget to cover your neck. This is very important क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका फेस और नेक अलग दिखे, तो प्लीज़ नेक को भी अच्छे से कवर करना ना भूलें. Now I will blend it gently with the help of this brush. फिर से मैं इसको अच्छे से घिस के अपने फेस पे ब्लेंड करूंगी। अभी भी चल रहा है blend and blend. दीदी बस हो गया। Now it's time for concealer. Concealer will cover up your dark circles. So if you have dark circle, please apply concealer, don't skip it. Apply this on your eyelids, under your eyes, bridge of your nose, forehead and on your chin. This will also highlight these areas. अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, हाय किसी की नजर ना लगे। Now I will blend it with a beauty blender. और यहाँ पे फिर शुरू होगा घिसना इसको अच्छे से घिस के हम लोग फिर से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। And remember, you have to do it in dabbing motion, not in rubbing motion. तो अभी बीबी का घिसना हो गया है कंप्लीट। Now it's time to set your base. For this I am using Lakme Rose Powder. You can use any translucent powder. पूरा मुंह पे लगा के मैं बिल्कुल भूत की तरह दिख रही हूँ। अरे आप लोग डरिएगा मत, मैं बहुत ही प्यारी भूत हूँ। अरे दीदी कितना भूत बनोगे आप, बस। Now coming to the eye makeup, I am using a transition shade on the crease of my eyes. This step is optional. I am doing it because I feel comfortable doing my eye makeup with it. You can skip this if you want. I'm applying lip balm on my lips. This will help my lips to keep hydrated. Now it's time for eyebrows. I just fill in my eyebrows very lightly, not so dark. I don't like dark eyebrows cause this look artificial, so I just want to keep my eyebrows natural, so I just fill in lightly. You guys can see my eyebrows look very natural. Eyes के लिए I will go for smoky eyes.
तो इसके लिए मैं अपने आईलिड्स पे काजल लगाऊंगी। दिस डोंट नीड टू बी परफेक्ट, क्योंकि आपको इसको स्मज करना ही है, तो आपको इसको परफेक्टली लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आईलिड्स पे इसको अच्छे से लगाइए। Now just blend it very well and blend it gently. Blend. I personally think smoky eye is very classy. You can go anywhere doing this, like a marriage, anniversary, birthday party, or any kind of occasion. Now I will apply some black eyeshadow over it. आई थिंक कि ब्लैक आई शेडो सबके पास होता है, तो आप कोई भी ब्लैक आई शेडो यूज़ कर सकते हो। ब्लेंड द आई शेडो वेरी जेंटली एंड केयरफुली। बहुत अच्छे से आप आई शेडो को ब्लेंड कीजिए। Now I will use this dark brown shade for my crease. बहुत अच्छे से आप अपने क्रीज पे इस ब्राउन शेडो को लगाइए। इससे आपको बहुत अच्छा और परफेक्ट स्मोकी इफेक्ट मिलेगा। And blend it properly. Now I will use the same dark brown shade for my lower lash line and a very little amount of the black eyeshadow and smudge it properly to get that smoky effect. Now it's time for eyeliner. This is also optional, but I think eyeliner completes your look and give a perfect eye look. So I'm doing a little wing here, and this makes my look perfectly complete. I will curl my lash with this eyelash curler. And apply some mascara. I am using Lakme Iconic Waterproof Mascara. This mascara is my absolute favorite mascara. Oh no, बिगाड़ दी मैं। चलो कोई बात नहीं, बड़ी-बड़ी देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। Now it's time for some apple cheeks. I mean blush. हाय मेरे लाल गाल। Now it's time for highlighter, and look at this highlighter. Ooh, this is my favorite. This is most favorite part of whole makeup process. Some of your cheekbones, some of on your bridge of your nose, some on chins, some on your cupid's bow and your brow bones. This gives you an ultimate glow. Now it's time for lipstick. This is from NY in the shade of Sitcon Special 12. This is my most favorite lipstick shades. I just love this shade. And yeah, this is the final look.